Hi, this is part 4 for the chapter The Biological Classification. In part 3, I discussed about the group bacteria or eubacteria of the kingdom Monera. And from this video, I'll be teaching about the importance of bacteria and about the group Cyanobacteria, which is also a member of the kingdom Monera. So let's first start with the importance of bacteria. Importance of bacteria. Now, bacteria हमारे लिए profits भी हैं and losses भी. It means that the bacteria are foes and friends both. बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, काम के भी हैं, और ये हमारे लिए लॉसेस भी हैं, हार्मफुल भी है. हमें बैक्टीरिया से काफी सारे हार्म्स पहुंचते हैं, जैसे डिजीजेस होना या फूड डिस्ट्रॉय होना. So these are the losses by bacteria. So under this category, that is importance of bacteria, we'll first discuss the useful activities of bacteria. Means bacteria हमें किस किस तरीके से useful हैं. So useful activities. Number 1 is in agriculture or in soil fertility. Bacteria हमें agriculture में help करते हैं. In agriculture. Now, how they help in agriculture? So some bacteria increases soil fertility. कुछ bacteria जो हैं वो soil की fertility को increase करते हैं, जैसे nitrogen fixing bacteria. वो bacteria जो nitrogen को fix करते हैं वो उस agricultural field की fertility को increase करेंगे. And then we have is in dairy. एग्रीकल्चर में ये डिकेइंग प्रोसेस से भी हेल्पफुल है. सो बाय टू प्रोसेसेस, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एज डिकम्पोजर्स. जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में उनको डिकम्पोज करके मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे ताकि वो प्लांट्स वापस उनको एब्जॉर्ब कर पाए. देन सेकेंड यूज है इन डेयरी. डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरियाज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पास्चराइजेशन. For example, we have the fermentation of lactose sugar by lactic acid bacteria. So ये lactic acid bacteria जो है वो lactose को ferment करके और lactic acid का formation करता है. पास्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे मिल्क को अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए हम लोग हीट करते हैं. एंड बाय पास्चराइजेशन टेक्निक हम मिल्क में जितने भी बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स प्रेजेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नंबर 3 जो है वो है इंडस्ट्रीज. इन इंडस्ट्रीज में जो बैक्टीरिया हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं. लाइक इन विनेगर इंडस्ट्री, एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटाई विनेगर फॉर्मेशन के लिए यूज होता है. देन इन फाइबर रेटिंग इंडस्ट्रीज लाइक फाइबर रेटिंग means for preparation of fibers or in the process of preparing fibers like jute, hemp, flax, these bacteria are used. Along with fiber retting, they are used in tobacco industry. Tobacco industry के अलावा ये टी इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं. Means curing of leaves is done by the fermentation of certain bacteria. So in tea industry, then in tanning of leather, and जो हमने फर्स्ट यूज देखा था वो था विनेगर इंडस्ट्री.
So ये कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं बैक्टीरिया के. And what is tanning of leather? So let me tell you, some bacteria decompose fats which are present in the skin of the animal. जब एनिमल की स्किन को रिमूव किया जाता है फॉर यूज और फॉर इकोनॉमिकल पर्पसेस, तो उनकी स्किन में कुछ फैट्स प्रेजेंट होते हैं. इन फैट्स का डिकम्पोजिशन करने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, एंड दिस is known as retting of fiber. Next है number 4, that is in case of medicines. So bacteria का use medicines में भी किया जाता है. Use of bacteria in medicines, like in some of the antibiotics are manufactured by the action of bacteria like bacillus. So we get antibiotics from the bacteria. Antibiotics helps us to prevent the infection of or to fight against the harmful bacteria. Then we have in the petroleum pollution, means some of the bacteria will check the pollution of the water bodies by biofuels. So in petrol pollution, or we can say to check petrol pollution, to check petroleum pollution, petroleum pollution. Then these are all the useful activities of the bacteria. एंड अब हम देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरिया. मींस अब तक हमने देखा हम बैक्टीरियाज को क्यों ग्रो करें, क्यों उनको फेवर करें. अब हम देखेंगे कि बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल क्यों क्यों है. सो लेट्स पुट द हेडिंग फर्स्ट, हार्मफुल एक्टिविटीज. हार्मफुल एक्टिविटीज, general activities which are harmful, we all know. So first one is cotton spoilage. Cotton spoilage. Second one is food poisoning. In my part 3 video, I told you about this food poisoning disease known as botulism. Food poisoning. If you haven't watched part 3, go check the description. You will get the link over there. Do watch it. Then a disease caused in the form of food poisoning is botulism, which I discussed in part 3. Botulism is caused by a bacteria Clostridium botulinum. Next is spoilage of food, means food का खराब होना. Spoilage of food. फूड से स्मेल आने लग जाएगी, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा. So that is spoilage. Spoilage of food. Some examples of the bacteria जो फूड को स्पॉइल करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मीट की सरफेस को ग्रीन कलर्ड कर देता है. द सरफेस ऑफ द मीट बिकम्स ग्रीन बाय द इन्फेक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस. मिल्क बिकम्स सोर बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. मिल्क जो है, दूध खट्टा हो जाता है, इसका रीजन है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. अगर आप दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्मी के टाइम पे ज्यादा टाइम तक आप गर्म नहीं करते हैं या उसे फ्रीज में नहीं रखते हैं, if you don't heat the milk properly or if you don't keep it in the freeze for long time, the milk becomes sour because of the action of bacteria like lactobacillus and streptococcus. Then the next is number 4, pollution of water. Number 4 is water pollution. So there are some cases of the epidemics like cholera, typhoid, jaundice and other infectious diseases which are caused by the bacteria when the humans consume polluted water.
जब पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम किया जाए और उसमें कॉलेरा, टाइफाइड या जॉन्डिस कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, सो डिजीज कॉज होने के चांसेस होते हैं, एपिडेमिक्स फैलने के चांसेस होते हैं। ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनको हम क्लोरीनेशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5, abortion. Abortion means what happens here, bacteria like salmonella, these induces abortion when the embryo fails to develop in the mother's body or womb. We call it as abortion, and it is done by the salmonella bacteria in the animals like goats, horses, sheep. Then we have is denitrification. Number 6, denitrification. Denitrification means the bacteria will convert the nitrogen compounds into free nitrogen. Denitrification में क्या होगा, nitrogenous compounds like nitrates, nitrites, इन्हें ये bacteria वापस atmospheric nitrogen या molecular nitrogen में convert कर देंगे. Example, Bacillus pseudomonas means दो अलग अलग genus है, Bacillus and pseudomonas. ये बैक्टीरियाज इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ व्हाई इज इट अ हार्मफुल एक्टिविटी? वी नो दैट प्लांट्स नीड द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. प्लांट्स को फिक्स्ड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है. तो अगर ये फिक्स्ड नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक में, मींस प्लांट्स के लिए फिक्स्ड नाइट्रोजन कम अवेलेबल होगी और इस तरीके से ये प्लांट्स को हार्म पहुंचाएंगे या इनकी ये हार्मफुल एक्टिविटी है. Next is number 7, putrefaction. Putrefaction. Putrefaction means the spoilage of proteins in the absence of oxygen. So कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. So this is all about the uses, or we can say the importance of bacteria, where we discussed harmful and useful activities of bacteria. हमने बैक्टीरिया के सारे इंपॉर्टेंस देख लिए हैं लगभग, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. So the group is actually known as cyanobacteria. So let's put the heading first of all. Cyanobacteria. Now, before starting about the characters, examples of the cyanobacteria, let's first see the names given to this group. अगर हमें ये names देखने को मिले, means they are talking about cyanobacteria. So सबसे पहला है blue green algae. Blue green algae. ये name पड़ा because of the color of this algae, the general color, which is because of the pigments, termed as BGA also sometimes, blue green algae. Then they are also represented by the name Cyanophyceae. Cyanophyceae or Myxophyceae. Cyanophyceae or Myxophyceae. Now, next we have some characters about the structure, the properties of cyanobacteria. So the first one is that these are gram-negative prokaryotes. They are gram-negative. इसका मतलब है जो ग्राम स्टेन है उससे ये स्टेन नहीं होंगे, ये सैफरन स्टेन को एक्सेप्ट करेंगे. So these are gram-negative prokaryotes. Cyanobacteria are first oxygenic photosynthetic organisms. These are first oxygenic photosynthetic organisms. इसका मतलब है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन
रिलीज किया था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने बैक्टीरियाज में देखा था कि बैक्टीरियाज कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, बट जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। The bacteria do not release or evolve oxygen during the process of photosynthesis, but oxygen is evolved during the case of photosynthesis in cyanobacteria. This is one of the important point. Next point is the presence of the pigments is on the surface of thylakoids. The photosynthetic pigments, photosynthetic pigments कहाँ प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स एक स्ट्रक्चर्स हैं इस टाइप के, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं और इनके सरफेस पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। Flattened structures, thylakoids are flattened structures on which the photosynthetic pigments are present. Now, what are the photosynthetic pigments which are there in the case of cyanobacteria? Another important point, do learn these pigments. First is chlorophyll A. Chlorophyll A, which is responsible for green color. Then we have is carotenoids. Carotenoids generally give yellow color. Then we have C-phycocyanin, which gives blue color. And the fourth one is C-phycoerythrin. It is giving red color. Now, one point which you need to keep in mind, C here stands for cyanobacteria. Okay, so हमने देखे ये 4 pigments जो कि important हैं, chlorophyll A, carotenoid, C-phycocyanin and C-phycoerythrin. C जो है phycocyanin और phycoerythrin के आगे, ये cyanobacteria को represent कर रहा है। Cyanobacteria generally blue-green color के होंगे because of these 2 pigments. Okay, now these cyanobacteria show Godikoff's phenomenon. So what is this Godikoff's phenomenon? Let's see. What do they show? They show Godikoff's phenomenon. Godikoff's phenomenon. Here the change of body color is done according to the wavelength of light. So blue-green algae shows Godikoff's phenomenon, which means the change of the color of the body with the change in wavelength of light. So let me write the explanation. Change बॉडी कलर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा किसके साथ? लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट की वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग बॉडी का कलर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी की। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम इसको, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इट इज रेड इन कलर। सो मैं रेड कलर से ही लिखती हूँ टू शो दैट इट इज रेड इन कलर। So generally blue-green algae are blue or green in color, but Trichodesmium is a blue-green algae which is red in color. Next point about this algae is that the red color of Red Sea is because of this algae. Red Sea का जो red color है वो इसी blue-green algae के कारण है, red color of Red Sea. Okay.
So you need to keep this example in your mind and these points. इसके बाद हम देखेंगे structure of cyanobacteria. So cyanobacteria का structure basically किसके similar होगा? इसका structure basically gram negative bacteria के similar होगा structure. ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, तो इसका मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे. यहाँ पे भी जो राइबोसोम्स हैं वो 70s टाइप के होंगे. न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होगा. Because cyanobacteria is also a prokaryote, it will not have membrane bound organelles. The ribosomes will be 70s type and it will not have a proper membrane bound nucleus. The type of nucleus will be incipient nucleus present in the cells of cyanobacteria. So structure similar to gram-negative bacteria, and they have these trichomes, the filamentous structures of blue-green algae, which are termed as trichomes. जो filamentous structure है blue-green algae का, उसे हम बोलते हैं trichomes. और ट्राइकोम्स एक म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड होते हैं. So trichomes are surrounded by mucilaginous sheath. This mucilaginous sheath is made up of pactic acid, which is a mucopolysaccharide. ये जो mucilaginous sheath है ये किससे बना हुआ है? Pactic acid, जो कि एक mucopolysaccharide है. सेल वॉल जो है वो बाइलेयर्ड है. आउटर वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई है और इनर वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, सेम एज ग्राम नेगेटिव्स. सेल मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन है, एज वी सॉ इन द बैक्टीरिया. अब कुछ फॉर्म्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, लाइक यूनिसेल्यूलर मींस सिंगल सेल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी. एग्जांपल्स हैं स्पाइरुलिना. देन नेक्स्ट है कॉलोनियल, वो ब्लू ग्रीन एल्गीज जो इंडिविजुअल सेल्स की तरह हैं बट वो कॉलोनीज में रहना पसंद करती हैं. सो कॉलोनियल एग्जाम्पल्स एनाबीना, माइक्रोसिस्टस. Anabina and microcystis. Then we have is number 3, that is filamentous type. Filamentous type is like a filament is there that is known as trichome. So number of cells जो हैं वो ऐसे attached होंगे to form a thread-like structure or a filament, which is known as trichome. Example Oscillatoria, nostoc. These are the examples. Now, I have one point about the oscillatoria. So, oscillatoria जो हैं वो hot water springs में survive कर सकती हैं. Oscillatoria can survive in hot water springs due to homopolar bonds in proteins which do not break easily. ऑसिलेटोरिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में सरवाइव कर जाती हैं बिकॉज इनके पास क्या होती है, इनके पास प्रोटीन्स में होमोपोलर बोन्स होते हैं. होमोपोलर बोन्स इन प्रोटीन्स, होमोपोलर बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स जो कि इजीली ब्रेक नहीं होंगी. तो ये जो ऑसिलेटोरिया है ये इजीली सल्फर हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव कर जाती हैं. नेक्स्ट है अबाउट साइटोप्लाज्म. तो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. पेरिफेरल साइड में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लाज्म. सो फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग क्रोमोप्लाज्म. Chromoplasm is the cytoplasm which is present on the peripheral part of the cell.
It has gas vacuoles and photosynthetic thylakoids. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें gas vacuoles and photosynthetic thylakoids present हैं. Photosynthetic thylakoids. Okay. Now, अब जो central part है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म. It is known, the central part of the cytoplasm is known as centroplasm, and it has nucleoid present in it. Nucleoid present. Type of ribosomes, as I told you, 70S will be there both in chromoplasm or centroplasm. दोनों ही पार्ट में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे कुछ membrane bound structures present हैं like gas vacuoles and thylakoids. Stored food, the type of the formation, the format in which the food is stored. So food is stored in two forms. Stored foods are कौन-कौन से हैं? फर्स्ट है अल्फा ग्रैन्यूल्स. फूड जो है वो इन दो फॉर्म्स में स्टोर होता है एंड अनदर वन इज बीटा ग्रैन्यूल्स. अल्फा ग्रैन्यूल्स और बीटा ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है. अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या है? अल्फा ग्रैन्यूल्स बनती हैं साइनोफाइसिन स्टार्च से. अल्फा ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च. और ये किसके सिमिलर हैं? ये स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन के सिमिलर हैं. साइनोफाइसिन स्टार्च is structurally similar to glycogen. Then we have is beta granules, और beta granules किससे बने हुए हैं? Beta granules are made up of fat droplets. So this is one important point regarding cyanobacteria. Next we have is nitrogen fixation. अब हम बात करेंगे cyanobacteria का one of the most important benefit और function, that is nitrogen fixation के बारे में. Nitrogen fixation. So most of the blue-green algae, not all the blue-green algae, सभी blue-green algae नहीं, पर ज्यादातर blue-green algae जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. They convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds, और इसी प्रोसेस को हमने बोला है नाइट्रोजन फिक्सेशन. This process is termed as nitrogen fixation. Now, what type of nitrogenous compounds? It can be amino acids, it can be nitrates, nitrites, ammonia, etc. So they increase the fertility of the soil. Now, this nitrogen fixation is done in the absence of oxygen. ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किस सिचुएशन में होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हुआ तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा. रीजन ये है कि जो एंजाइम यूज होती है नाइट्रोजनेज, ये इनएक्टिव हो जाती है. नाइट्रोजनेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो. सो nitrogenase enzyme needs absence of oxygen to fix nitrogen. This condition, that is absence of nitrogen, is provided in the form of specialized cells. Cyanobacterias में एक specialized cells present होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, anaerobic conditions होती हैं, and those are known as heterocysts. So वो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनमें हेटेरोसिस्ट देखने को मिलता है. रिमेंबर, those cyanobacteria which have which perform the function of nitrogen fixation, they will have heterocyst.
This heterocyst will have thick wall, so it is impermeable to oxygen and the conditions are anaerobic within the cell. हेटेरोसिस्ट की वॉल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है एंड ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है, ये गैसेस के लिए इम्परमिएबल है. सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का भी कोई फंक्शन नहीं है. नो फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ हेटेरोसिस्ट. Further in the detail about nitrogen fixation, we'll see in plant physiology. Next we have is reproduction. अब हम देखेंगे reproduction in cyanobacteria. So reproduction different methods से होता है. सबसे पहले binary fission, that is amitosis. जो unicellular blue green algae हैं उनमें reproduction binary fission के through होता है. When a cell divides into two daughter cells. Second, अगर हम लोग दूसरे asexual methods की देखें, during unfavorable conditions. So binary fission किस situation में हो गया? During favorable conditions. Favorable conditions में तो binary fission हो जाता है, but during unfavorable conditions or in the filamentous bacteria, blue-green algae, what happens? Another method is by heterocysts. So these heterocysts sometimes behave as reproductive structures and germinate to form new filaments of blue-green algae. Next is hormogonia. Hormogonia. So during unfavorable conditions, जब unfavorable conditions होती हैं, so heterocyst के पास से filaments break होने लग जाते हैं, and those structures will form new filaments known as hormogonia. So if you see into your NCERT, you will see the picture of nostoc. It looks like this somewhat. These are the normal cells. Then they have one heterocyst present in between the normal cells, which is thick-walled. And then again, the normal cells are present in the filament. This is one nostoc filament, and this nostoc filament is surrounded by mucilaginous sheath. As I told you, this red color surrounding part is mucilaginous sheath. So you can look into your NCERT for the diagram. Okay, so this mucilaginous sheath is present all around this filament. Now coming back to the reproduction, the third or the next type of structure we have is akinets. Akinets are also known as resting spores. These are known as resting spores. The vegetative cells will transform due to deposition of food and then later form the new filaments. And the fourth one is by endospore. So these are few methods of reproduction in the blue-green algae during unfavorable conditions. Now next we have got is the economic importance of bacteria. There are various importance of the bacteria, means useful and harmful, both the activities are performed. So the next we have is importance of blue-green algae. Importance of blue-green algae. First, we'll talk about the useful activities. Useful activities. Number one, they are the first oxygenic organisms or photosynthetic organisms on the earth. So सबसे पहले ऑक्सीजन इवोल्यूशन किसने किया था? फोटोसिंथेसिस से ब्लू-ग्रीन एल्गी ने. So they play significant role in evolution of aerobic forms of life. जब ऑक्सीजन अर्थ पे आई तभी तो aerobic forms आए अर्थ पे. When oxygen got evolved by photosynthesis, then only those organisms or which survive by the respiration of oxygen in the presence of oxygen, that is aerobic forms of the life, could come on earth. So first is significant role in evolution of aerobic forms of life. The next is they increase
फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. सो इम्प्रूव soil fertility mainly by nitrogen fixation. Soil fertility, soil fertility. Next is they can be used as proteinaceous food. ब्लू ग्रीन एल्गी में काफी अमाउंट में प्रोटीन्स मिलता है, सो हम इसे फूड की तरह भी यूज करते हैं. सिंगल सेल प्रोटीन्स, SCP नाम दिया गया है. सो प्रोटीनेशियस फूड, and the example is important, that is spirulina. They are used as a source of proteins. Then they are used as green manure also. Used as green manure. Example, Anabaena, Spirulina, oscillatoria. Next is they secrete toxins. They secrete toxins which inhibit the growth of mosquito larva. ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो टॉक्सिन सिक्रीट करती है, किसके लिए? टू इनहिबिट मींस रोकने के लिए, किसको? मॉस्किटोज के लार्वा की ग्रोथ को. टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो लार्वास. मच्छर के लार्वास की ग्रोथ को रोकने के लिए ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं. These are all the useful activities. Compared to useful activities, harmful activities are less. So we'll put the heading harmful activities. Number 1 is they cause water bloom. Water bloom is caused by blue-green algae. Now what is water bloom? So let's put the point first. Water bloom means excessive growth of plants in the water which secrete toxins, and they lead to the death of the aquatic organisms. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं ये एक्सेसिवली ग्रोथ करती हैं और दूसरे प्लांट्स ग्रो करते हैं. जब ये प्लांट्स में ग्रो करते हैं तो वाटर बॉडीज को चोक कर देती हैं, उनमें ऑक्सीजन का डिसॉल्विंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है बिकॉज सरफेस पूरा ये कवर अप कर लेती हैं. अब जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिक्स हो पाएगा वाटर में, तो जो वाटर बॉडीज में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो मर जाएंगे. तो वाटर ब्लूम बिकॉज इट chokes the water, it does not supply the oxygen to the aquatic organisms, it leads to the death of the aquatic organisms. Second point is they produce toxins. Blue-green algae produce toxins which are harmful for normal organisms also. So these are the importance of blue-green algae, and we are here done with the first kingdom, that is kingdom Monera. Wow. Now we have some practice questions, as in part 3 I didn't take practice questions because bacteria was not completed there. So I'll have some practice questions here. Number 1, as usual, keep writing the answers along with the question number and keep taking the screenshots of the questions too. So question number 1 is bacterial ribosomes are called. Bacterial ribosomes are called. Number 1 means A. Option A is autosomes. Option B, dictyosomes. Option C, centrosomes. And option 4, polyribosomes. Polyribosomes. This is question 1, and now we have question 2. Question 2 is nitrifying bacteria are.
Now, this point I took in the last session, means part 3. Nitrifying bacteria are option A, autotrophs, option B, saprotrophs, option C, photoautotrophs, and option D is chemoautotrophs. Then we have question number 3, that is genes for antibiotic resistance are located in genes for antibiotic resistance are located in, and now we have the options. A is chromosome, B is nucleus, C is cell wall, and D is plasmid. Now, we'll just have some changes in the pattern, how we solve the questions. I'll mark the answers here itself so that it will be clearer to you. So write your answers first and then only watch the answers. So answer for question number 1 is polyribosomes. The ribosomes in the bacteria or prokaryotes remain attached with each other. प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो एक साथ में अटैच्ड होते हैं और एक कंप्लीट सीरीज टाइप बनाते हैं, that is known as polyribosomes, that somewhat looks like this. All the ribosomes attached together forming the polyribosomes. Next, question number 2, nitrifying bacteria are chemoautotrophs. Means they will use the energy from the inorganic materials and hence known as chemoautotrophs. Question number 3 is genes for antibiotic resistance are located in plasmids. Our plasmids will have the genes for resistance against antibiotics. Next, question number 4. Question number 4 is mucopeptide is more in cell wall of mucopeptide. I hope you all remember that mucopeptide is present in cell wall. Mucopeptide is more in cell wall of. Now this question is quite easy if you see the options. A, gram-positive bacteria. Option B is gram-negative bacteria. Option C is blue-green algae, that is cyanobacteria, and option D is bacteriophage. Then we have question number 5. For question number 4, I'll tell you how to just cancel the options and get the correct answer, like doing 50-50, 25-25 sort of thing. Then question number 5 is bacteria with tuft of flagella at one side is known as bacteria with tuft of flagella on one side is known as
Option A, Amphitrichus. Amphitrichus. Option B, Peritrichus. Option C, Atrichus. And option D is Lophotrichus. I have discussed the types of flagella on the base, the types of bacteria on the basis of the flagella in my part 3. Next is question number 6. Which of the following movement may be found in blue-green algae? Which of the following movement may be found in blue-green algae? Movement may be found in BGA. Option A, flagellar, means by the help of flagella. Option B is ciliary, means by the help of cilia. Option C is gliding, means by slipping. And option D is none. So let's check out the answers for these 3 questions. First question, mucopeptide is more in. Now, how you can find answer if you don't know the answer? Let me tell you. What is bacteriophage? Bacteriophage is a virus which infects bacteria. Virus जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. So this is not answer. Then we are left with gram positive, gram negative and blue green algae. Now remember blue green algae क्या है? किस टाइप के हैं? ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर टाइप के हैं, राइट? तो अगर दो ऑप्शंस ग्राम नेगेटिव टाइप के हैं तो दोनों तो आंसर होंगे नहीं. So this is also not the options. So our correct answer is option A. That is gram positive bacteria. This is how you can eliminate your options. आप अपने options को remove कर सकते हैं और finally correct answer आपको मिल सकता है. For question number 5, the answer is D, Lophotrichus. The bacteria will look like this. A tuft of flagella on one side, like this. Then we have question number 6. Type of movement in blue-green algae. Now, blue-green algae का हमने structure देखा, ना हमने flagella की बात की, ना हमने cilia की बात की. We didn't talk about the structures like flagella or cilia in blue-green algae, but we definitely talked about mucilaginous secretion or mucilaginous coating. Right? So in the presence of this mucilaginous secretions, the blue-green algae will show gliding movements. Now we have the last question for this video. Question number 7. Nostoc performs. Nostoc performs. Option A, only photosynthesis. Only photosynthesis. Option B, only nitrogen fixation. Only nitrogen fixation. Option C, photosynthesis and nitrogen fixation simultaneously. Photosynthesis and nitrogen fixation simultaneously means at the same time. Option D, either nitrogen fixation or photosynthesis. At a time means at a given time, at a particular time, they will either do nitrogen fixation or photosynthesis. Now, what will be your answer?
Now, we talked about both nitrogen fixation and photosynthesis in blue-green algae, and nostoc is a blue-green algae. Now, in nostoc, as I told you, the structure is filamentous type where normal vegetative cells are there and in between them heterocysts are also present. So in these heterocysts, what will be performed? In these heterocysts, nitrogen fixation will be done, where in the normal vegetative cells, photosynthesis will be done at the same time without affecting the activity of nitrogen fixation. So answer is option C. And here we are done with the practice questions. Please like this video,